Hello everyone, this is Himanshu Mehta and we are from School of Finance, Navgurukul. So today we'll be studying about Financial Accounting Module 2, Books of Accounts. Okay, we have already studied about Section 1 and Section 2 in the previous video. Now we'll be focusing on Section 3. So the Section 3 is about negotiable instruments. What are negotiable instruments? तो negotiable instruments क्या होता है? ठीक है, इसका मीनिंग ये है, ये ऐसे प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं जहां आप एक वादा कर रहे हो, आप एक प्रॉमिस कर रहे हो कि आप ये पैसा उनको दोगे. Okay, so what are negotiable instruments? The simple meaning is, so these are the documents where you promise that you will pay this money to whosoever you are owing it. Okay, it might be a business, it might be anything else. Okay, now these are legal documents that can be like you can transfer it from one person to another. Okay, you prepare it for example and then you transfer it to another person. Okay, you can use it like cash, okay, to pay debts. Okay, like you have this set of document and then you can use it, okay, to pay any outstanding debt that you owe to a supplier or to a customer, anything. And you can also deposit in bank like money. Okay, so that is the power that these documents hold. ठीक है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो एक प्रकार की प्रॉमिस है कि हम ये पैसा उनको भरेंगे, तो इनकी पेक्युलरिटीज या इनके क्या कहते हैं, इनकी खासियत क्या है? एक कि ये तो एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, एक इसको हम कैश की तरह भी यूज कर सकते हैं अगर हमारा कोई डेट है. ठीक है, हमारा कोई अगर उधार है सप्लायर से या कस्टमर से, तो भी हम यूज कर सकते हैं. और इसको बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते हैं पैसों की तरह. इसके मेन टाइप्स क्या है? व्हाट आर इट्स मेन टाइप्स? सो देयर आर थ्री मेन टाइप्स. ठीक है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक. Promissory note, it is a written promise by you that you will pay money on so and so date. For example, you bought some goods and you say that I will pay money in October, okay, on 5th of October. Okay, so that is a written promise that you write to pay to the opposite party, to tell them that I will pay on this and this date at so and so amount. What is bill of exchange? Bill of exchange is like a written order, okay, where you write that in a document which is signed, okay, which needs to be signed. Bill of exchange always needs to be signed. Okay, so it is a written order that you have to pay this much amount of money, like that. Okay, so promissory note is generally written by a person who has bought goods but is still left to pay money. Okay, so you write it that okay, I promise to pay 20,000 by 1st of October 2026, like that. Bill of exchange is, so you have bought 20,000, so the business that is there on the opposite side will write an order, okay, that so and so, like Mahesh has to pay this much amount on this date. Mahesh has to pay 20,000 or 50,000 by 1st of November, like that. Okay, so that is made by the drawee who makes the bill, drawer, sorry, yeah. And then there is check, where there is an order to the bank, okay, to pay the money. तो इसमें तीन अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि मैंने बोला. एक प्रोमिसरी नोट है जिसमें एक रिटर्न प्रॉमिस है आपकी तरफ से, आपने 20,000 का सामान लिया और आप एक प्रॉमिस कर रहे हो एक डॉक्यूमेंट में लिख के कि मैं 1 अक्टूबर तक आपको 20,000 पे कर दूंगा. ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि सामने वाली पार्टी जिनसे हमने सामान खरीदा है, वो एक प्रकार का ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको इतना अमाउंट इतने टाइम तक भरना ही पड़ेगा. ठीक है, और चेक क्या होता है कि इट इज अ ऑर्डर, एक प्रकार का ऑर्डर है, हम बैंक को देते हैं तो पैसा भरने के लिए. A bill of exchange, okay, so as I said, who is involved? Drawer. Okay, like you, if you have a business and you are the seller, you are known as a drawer or a maker as well, where you sold goods, for example, to Ashish on credit. Okay, and he is the person, you are the person who makes the bill. Who is the drawee or the acceptor? As I said, Ashish, who is the customer who has bought the goods on the credit and who has to pay. Okay, who is also known as the acceptor. And then there is payee, who is the person who will receive the money. Normally payee and drawer are same, but in
complex organizational structures where MNCs and all are there, you can have a department who is a payee and the other department who is the drawer. Okay, that can happen. ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है. देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व हियर. ओके, एक होता है ड्रॉअर या सेलर, मतलब अगर आपका खुद का बिजनेस है और आप गुड्स क्रेडिट पे बेच रहे हैं, आप सामान क्रेडिट पे बेच रहे हैं, तो आपको ड्रॉअर या मेकर या सेलर भी बोला जाता है. आप है जो बिल बनाते हैं और ऑर्डर देते हैं. अब ड्रॉई कौन है? जैसे मैंने महेश कस्टमर या एक्सेप्टर जिसको बोलते हैं, उसको सामान बेचा है 20,000 का क्रेडिट पे, ठीक है, तो उसको ड्रॉई बोला जाता है. वो महेश को मुझे 20,000 ये डेट पे इतना अमाउंट का देना पड़ेगा, ठीक है. और पेई कौन आता है? जो पैसा रिसीव करेगा. अब पेई और ड्रॉअर नॉर्मली सेम ही होता है, पर कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में अलग भी हो सकता है. जैसे पेई पूरा कोई डिपार्टमेंट है और ड्रॉअर कोई पर्सन है. Now what are the journal entries for bill of exchange? So when bill is drawn or made, okay, जब आप बिल बनाते हो as a seller या drawer, then what will be the journal entry? तब क्या होगी journal entry? Bills receivable account debit to debtors account. When bill is accepted, जब bill accept हो तो कोई एंट्री की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ड्रॉन हुआ या जब बना तब ऑलरेडी हो गया. When bill is honored या paid, जैसे आशीष या महेश जो भी है उसने 1 अक्टूबर को पे कर दिया. If Ashish or Mahesh who owed you money have already paid the bill on the date that was mentioned, so it is honored in the sense it is paid. तो आपकी एंट्री क्या होगी? व्हाट विल बी एंट्री? कैश और बैंक अकाउंट, हाउएवर द पेमेंट इज, जैसे भी पेमेंट है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ओके, और व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड, जब बिल डिसऑनर हुआ है या पे नहीं हुआ है, तो क्या होगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ओके, यहाँ पे पेमेंट हो गया था, हियर द पेमेंट वाज डन, दैट इज व्हाई कैश और बैंक अकाउंट वाज डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल. यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ, हियर पेमेंट इज नॉट डन, दैट इज व्हाई डेटर्स अकाउंट इज डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए 3 पार्टी होती है, जबकि प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टी होती है, एक जो सेलर है वो, एक बायर है वो, ठीक है. और जब बैंक चेक का इन्वॉल्वमेंट है तब भी 2 पार्टी होगी, बैंक और आप, ठीक है, या बायर सेलर और बैंक, 3 पार्टीज. ओके, सॉरी 3 पार्टीज हो, बैंक, सेलर और बायर. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स सेक्शन 4 which is error and suspense account. Now what are the types of accounting errors? One is error of omission, where you completely forget to record a transaction. Okay, you had a cash sale of 5,000, now you forgot to write that in your books. Okay, so that is error of omission. What is error of commission? Recorded in wrong account, but same type, like you wrote 10,000 as 1,000 while recording a sale. Okay, so you had to record a sale of 10,000, but by mistake you recorded it as only 1,000 rupees. Third is error of principal, where wrong type of account is used. Okay, so you purchased furniture, but rather than recording it as an asset, you recorded it as an expense. Okay, so the principal is violated, and hence it is known as error of principal. And then there is compensating error, where 2 errors cancel each other out. For example, somewhere you had to record 1,000, you recorded 1,100 on debit, and somewhere you wanted to record 1,100 on credit, but recorded 1,000 on credit. So one side you did 100 extra on debit and another side you did 100 less on credit. So in a way it is balancing each other out, and hence it is known as compensating error. ठीक है, अभी कौन कौन सा टाइप का अकाउंटिंग एरर है? पहला है एरर ऑफ ओमिशन, जहां आपका कोई सेल हुआ है, ठीक है, 5,000 का, पर आप बुक्स में लिखना भूल गए पूरे सेल को, ठीक है, भूल ही गए पूरे ट्रांजेक्शन को लिखने का, तो एरर ऑफ ओमिशन है. फिर दूसरा है एरर ऑफ कमीशन, जहां पे आपने गलत अकाउंट में लिख दिया, जैसे कि 10,000 का सेल हुआ था पर उसको सिर्फ 1,000 लिख दिया, ठीक है, उसको कमीशन एरर, अमाउंट गलत लिख दिया. फिर आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये क्या होता है कि पर फर्नीचर हमने अभी खरीदा पर उसको एसेट रिकॉर्ड की करने की जगह एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, तो हमने जो बेस प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग का वो वायलेट किया है, तो गलत अकाउंट ही यूज कर दिया, तो उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है. और कंपेंसेटिंग एरर क्या होता है? जहां 2 एरर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है. जैसे कि एक जगह 1,000 क्रेडिट में लिखना था पर आपने 900 ही लिखा, और दूसरी जगह 1,100 डेबिट में लिखा पर 1,000 ही लिखा, तो हुआ क्या कि दोनों 100 एक साइड 100 ज्यादा हुआ, एक साइड 100 कम हुआ, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, इसलिए कंपेंसेटिंग एरर. नाउ व्हाट इज अ सस्पेंस अकाउंट?
तो think of it as a temporary parking space. When is it used? When trial balance doesn't match. तो जब ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, हम आगे देखेंगे उसको, तो तब जो डिफरेंस होता है वो हम सस्पेंस अकाउंट में लिखते हैं. फिर क्या करते हैं, हम एक एक ट्रांजेक्शन देखेंगे. वी विल लुक एट ऑल द ट्रांजेक्शंस वन बाय वन एंड फाइंड द एरर्स. ओके, सो ईच टाइम वी फिक्स एन एरर. ठीक है, हमें कोई एरर मिल गया तो होगा क्या, सस्पेंस अकाउंट रिड्यूस होगा. तो हुआ क्या कि डेबिट और क्रेडिट बना है, वी मेड डेबिट एंड क्रेडिट. देयर इज सम अमाउंट दैट इज मिसिंग, लाइक कुछ अमाउंट है जो मिस हो रहा है, 1000, 1000, 2000 या 2000. तो हम उसको एक सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे. वी विल पुट दैट इनटू सस्पेंस अकाउंट. इट इज लाइक अ टेम्पररी अकाउंट. ओके, एक टेम्पररी अकाउंट है. फिर हम क्या करेंगे कि विल फाइंड ईच एरर्स. हम ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ एरर हो रहा है और उसको एक बाय एक फिक्स करेंगे. और जैसे ही हमें वो फिक्स होगा, वेन एवर वी फाइंड एरर एंड फिक्स देम, विल रिड्यूस दैट अमाउंट फ्रॉम सस्पेंस अकाउंट. ओके, हम उतना अमाउंट सस्पेंस अकाउंट से रिड्यूस कर देंगे. एंड व्हेन ऑल एरर्स विल बी फिक्स्ड, सस्पेंस अकाउंट विल बिकम जीरो. जब सभी एरर फिक्स हो जाएंगे तब सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट हेल्प्स अस फाइंड एंड मिक्स फिक्स मिस्टेक्स. तो सस्पेंस अकाउंट हमें मिस्टेक ढूंढने में और उनको फिक्स करने में हेल्प करता है. और इसकी प्रोसेस क्या होती है, 3 स्टेप प्रोसेस ये फिक्स करने की. पहले फाइंड द एरर. यू फाइंड द एरर के व्हाट मिस्टेक वाज मेड, व्हिच अकाउंट वाज अफेक्टेड. Second is cancel the wrong entry. So do the opposite of wrong entry. And third is make the correct entry. Write what should have been written. तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले एरर ढूंढते हैं कि कहाँ गलती हुई है, कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ. फिर दूसरा कि गलत एंट्री का ऑपोजिट एंट्री करो. और फिर थर्ड है कि करेक्ट एंट्री करो. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, you wrote 1000 as 100, like let's say the transaction was cash sales of 1000, but originally it should be only 100. So what you will do here is, you found that cash sales of 1000 is a mistake. Then you do let's say not cancel the wrong entry, so do the opposite of wrong entry. So rather than cash sales of 1000, you will do that cash not received of 1000. So both entries will cancel out each other, and then you make the correct entry, that cash sales of 100. Okay, this is how you do it. तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमने कैश सेल्स किया 1000 का, पर जबकि वो होना चाहिए था सिर्फ 100 रुपए का. हम क्या करेंगे, हमें पहले एरर मिल गया कि कैश सेल्स ऑफ 1000 एक एरर है. फिर हम उसका ऑपोजिट एंट्री करेंगे कि कैश डेबिटेड फॉर 1000 या ऐसा. ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. और फिर हम सही एंट्री करेंगे, कैश सेल्स ऑफ 100. ऐसे हम करते हैं 3 स्टेप प्रोसेस. दिस इज हाउ यू डू इट. ओके, so this is it for this section. Okay, we'll look at other sections in the next video. If you have any doubt, please write to us in the comment box. If you even like the video, then also write in the comment box. And please do like, share and subscribe the video. Thank you.